in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and
3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees,
with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs.
50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skill certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution,
our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intrastate transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding.
The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states
through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0,
which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up
for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge
on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose
to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The
The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition.
To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to seagoing ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019.
and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. आइटम नंबर 2। तो बजट में सरकार ने आयकर दाताओं को बड़ा तोहफा दिया है और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख की सालाना आय पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। ये एक बड़ी राहत है। बाजार तो उम्मीद करके ये चल रहा था कि शायद 10 लाख तक की आय को है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाए, लेकिन उससे कहीं बड़ी राहत सरकार ने दी है। आप ये ध्यान रखिए, ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है, तो एक मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़े कोई फैसले नहीं आए हैं, लेकिन इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने निश्चित तौर पर बड़ी राहत दी है। जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य है FY26 के लिए, सरकार ने उसको रिवाइज करके 4.4% कर दिया है। बाजार के लिए ये भी पॉजिटिव चीज है। हालांकि केपेक्स को लेकर बाजार कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद कर रहा था,
कैपेक्स को लेकर बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन इनकम टैक्स के ढांचे में स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाएगा और वित्त मंत्री ने उसकी बाकायदा जानकारी भी सदन में दी है। तो टैक्स पेयर्स के लिए कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ अच्छे ये ऐलान निकल के आ रहे हैं बजट की तरफ से, और इसके अलावा इंफ्रा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फिशरीज को लेकर, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लेकर भी कई सारे ऐलान हुए हैं। उसके आगे हम बारीकी से चर्चा करेंगे। हम तैयार हैं स्टूडियो में, हमारे दोनों को एंकर हमारे साथ आ गए और हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। डिम्पी, निश्चित तौर पर टैक्स में बड़ी राहत देखिए आनी ही चाहिए थी, और देखिए मैडम ने जब पहली लाइन ही उन्होंने बोली तो उन्होंने पहली लाइन में ही बात बता दिया था कि वो इनकम टैक्स में छूट देने जा रही हैं। फिर बीच में बोला, उन्होंने कहा मैं लास्ट में बताऊंगी, फिर लास्ट में भी आके बताया और उन्होंने कहा 12 लाख तक कोई तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन बाद में स्लैब्स भी आए। देखिए स्लैब्स आते हैं क्योंकि उसमें बाद में आपको सब्सिडी और छूट वगैरह मिल जाती है। तो ये बात मोटा मोटी समझ लीजिए, किसी की भी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए की है महीने की, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो भारत के अंदर अब 12 लाख रुपए के तक कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है 12 लाख तक का। वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, सीए आपको सेविंग करना पड़ेगा। एटीसी वाला कोई स्लैब के अंदर चेंज नहीं आया। हमें एक्सपेक्टेशन था कि एटीसी के अंदर कुछ ना कुछ लिमिट बढ़ेगी। डेडिकेटेड ये नहीं बताया कि हाउसिंग को लेकर आप और क्या होगा। हाँ ये आया है कि भाई आप 2 घर रख सकते हो, उसकी वैल्यूएशन का नील होगा, दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा। फिर ट्रांसफर करते हो आप जब एक दूसरे के मकान को, तो उसको लेकर वो कह रहे हैं हम पॉलिसी बनाएंगे, इसलिए थोड़ा रियल एस्टेट ऊपर आ गया। अदरवाइज बहुत सारे फाइन ट्यून चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते ये बिल को टेबल्ड करेंगे, न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, उसके अंदर सारी चीजें फाइन ट्यून होंगी। लेकिन मेरे को जो 2 चीजें इसी पूरे इनकम टैक्स वाले में दिखी, वो ये दिखी कि मार्केट 10 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, 12 लाख आया, इसलिए मार्केट ने शूट किया एकदम से। लेकिन क्लैरिफिकेशन ऑन एटीसी, ऑन एटीडी, एटीसीसीई, वड़ावर जो भी ड्यूटीज सेक्शंस लगते हैं, उन सब के अंदर क्लैरिटी नहीं आई। हाँ स्लैब्स आ गए, ये अच्छी चीज़ आई है कि आपको नए स्लैब्स मिल गए हैं रिजीम के अंदर। और उन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है 15% का। फिर उन्होंने इसी 16 से 20 लाख वाले ब्रैकेट में, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स चले जाते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने 2 रैशनल दिए हैं। 20% का प्रपोजल है और 15% का प्रपोजल है। तो टैक्स सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लेकिन हाँ मार्केट इसको एंजॉय कर रहा है। आपको बताऊं, आप कुछ मत देखो, आप सिर्फ इंडिया विक्स देखो। आप दिखाइए जरा स्क्रीन पर, इंडिया विक्स करीब 9% नीचे है और हम 14 पे हैं। यानी कि जितना भार हम सिर पे लेके गए थे बजट से पहले, हम काफी हद तक अपना भार को कम कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि मार्केट को थोड़ा स्लो रिएक्शन आ सकता है। असल में जो चीजें दी गई हैं उसका रिएक्शन या उसका स्पाइरल इंपैक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। कैपेक्स को लेकर डिम्पी थोड़ी सी निराशा है। कैपेक्स देखिए, कैपेक्स को हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कैपेक्स का क्लैरिफिकेशन आएगा। थोड़ा सा कम है क्योंकि उन्होंने अपने फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स हैं वो सब भी दिए हैं। 4.8 किया है, गोल था 4.9 का, तो ज्यादा नीचे नहीं हुआ, 4.8 ही हुआ है। 4.9 से 4.4 कर दिया। FY25 का 4.8 है, 4.4 है FY26 का, तो अगले साल के लिए वो 4.4 हो जाएगा। कैपेक्स करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। एक अच्छी चीज उन्होंने वो बताई, जो मैं जब बजट स्पीच सुन के सारे पॉइंटर्स दे रहा था, तो मेरे को जो अच्छी चीज उसके अंदर ये लगी कि ना केवल कैपेक्स वाली बात अच्छी है उसके अंदर, बल्कि डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली उन्होंने बात बताई। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का फंड है जो एजुकेशन में डाला जाएगा। ये आया है ना, हेल्थ को लेकर फंड आया। जो सारी चीजें काफी हद तक मेरे को ठीक लग रही है। थोड़ा मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा मानसी, मार्केट के रिएक्शन को भी देखना होगा। और जिस नारे को हमने लगाया था कि आसान भाषा में हम समझाएं, सरकार का भी ये कहना था टीडीएस प्रोसेस को भी आसान करने की बात कही। सेक्टर स्पेसिफिक जिस तरह से MSME स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी की बात, इंश्योरेंस में FDI की सीमा बढ़ाने की बात, और इनकम टैक्स के नए कानून को कम शब्द और धाराओं में उन्होंने कहा कि देखो वो ये बता रहे हैं कि आसान भाषा, मैं ही बता देता हूं क्योंकि मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं। और ये कह रही है कि अगर नया रिजीम, नया हम इनकम टैक्स लेके आएंगे तो 50% ऑफ द लॉज उसमें से हट जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं, अभी मान लो 16 पॉइंट्स बता रही हैं, तो 16 में से कह रही है कि 7 हटा देते हैं हम, 8 हटा देते हैं, 7 अभी भी रहेंगे। तो 50 आधे कर देंगे, तो आधा % हो जाए, आधा हो जाएगा साफ। अभी जो TDS की बात बता रहे हो, उन्होंने एक पॉइंट स्पेसिफिकली बोला कि रेंट पर जो TDS है, जो आप मकान दे रहे हो 2.5 लाख की जगह उसकी सेवा हम 6 लाख कर देते हैं। यानी कि अगर आप किराए के मकान में भी रह रहे हो, उस पर आपका जो TDS लगता है, जो गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता था, मकान मालिक की पॉकेट में नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा था, उन्होंने कहा जी हम 2.5 लाख से उसको 6 लाख कर देते हैं। तो इट्स अ गुड साइन। थोड़ा बूस्टिंग की गई है हाउसिंग को। आपको पता है ये खबर आने के बाद रियल एस्टेट का इंडेक्स लाल निशान में था, उसके बाद काफी आया। सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट है, और हमारी इन हाउस टैक्स एक्सपर्ट्स कविता थपलियाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मार्केट के कुछ एक और एक्सपर्ट्स को भी फटाफट से जुड़ेंगे, लेकिन मुद्दा वही टैक्स का है। कविता, 12 लाख तो खूब तालियां बजी है यार। सबसे बड़ा जो बम धमाका है खुशी का, वो सबसे आखिर में रखा गया था मेरे ख्याल से, और जो हमेशा होता है, लेकिन अब की बार उम्मीद के मुताबिक था ना।
अब की बार तो उम्मीद के मुताबिक था, सब उम्मीद से चाह रहे ज्यादा थे है। उम्मीद से ज्यादा है। पूरा नया टैक्स स्ट्रक्चर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, और हालांकि सिंप्लीफिकेशन पर हमेशा से जोर रहा है वित्त मंत्री साहिबा का और सरकार का भी। और कल का अगर आपने भाषण सुना हो पीएम मोदी का, तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो गरीबों पर और मिडिल क्लास पे बनी रहे, और वही कृपा हमें बरसती भी दिखाई दे रही है पूरी तरह से। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, लेकिन जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पे भी हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर 12 लाख तक जो है यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर जोड़ दिया गया है उसमें आपको कितना फायदा होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं? मेरी किताब मैंने जिसमें लिखा था, आप दीजिएगा जरा प्लीज। सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, वो जब तक आए तब तक मैं आपको एक नया टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो समझा देती हूँ। पूछ लेता हूं जब तक एक टैक्स स्ट्रक्चर हम बता देते हैं जो निकला हुआ है। देखिए, 4 लाख तक कोई इनकम नहीं, कोई टैक्स नहीं है यहाँ पर, जो है ये नील है। 4 से 8 में अगर आप आते हैं, सालाना आय अगर आपकी है तो उसमें 5% आपको देना होगा। अगर ग्राफिक्स है हमारे पास स्क्रीन पे तो ये भी फ्लैश कीजिएगा। 8 से 12 में देखिए 10%, 12 से 16 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो उसमें 15%, 16 लाख से 20 लाख तक अगर आप कमाते हैं सालाना तो उसमें आपको 20% टैक्स देना होगा। 20 लाख से 24 लाख अगर आप ईयरली इनकम कमाते हैं, अगर आपकी सालाना आय है तो आपको 25% देना होगा। 25% के ऊपर है 30% का टैक्स पैकेट। ये है नया टैक्स स्ट्रक्चर जो कि सिंप्लीफाई किया गया है पूरी तरह से। यहाँ पे नए टैक्स स्लैब्स डाल दिए गए हैं और एनुअल पैकेजेस के हिसाब से आपको टैक्स स्लैब्स में डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। सुधीर कौशिक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, बाद में आपके सवाल लेते हैं। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, आपकी खुशी आपकी आंखों से झलक रही है, मुस्कान में भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बताइए, उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से ज्यादा? देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी कि नहीं बनी, ये बताइए आप सबसे पहले तो। जो गरीब अपने आप को या मिडिल क्लास कहते थे उनका छप्पर तो फट गया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, तो सरकार ने बहुत कुछ दे दिया है जी। तो इसमें अच्छी बात ये है कि एकदम 7 लाख से 12 लाख, यानी कि अभी हम पीछे देखें तो 5 लाख तक का टैक्स था। अगर 2 साल हो गए, एक्चुअली में अब मिडिल क्लास के हाथ में कंजम्पशन के लिए जो पैसा चाहिए था या जो अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हाथ में पैसा आ गया है। बिल्कुल। जिसकी अगर 12 लाख या 15 लाख है, अगर उसको 1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वो टैक्स में जा रहा था, तो वो बहुत आसान है। क्योंकि वो जो कंपलसरी सेविंग थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, हम तो खैर उसके ज्यादा वो हैं, रिकमेंड करते हैं कि सेविंग भी करो क्योंकि फ्यूचर आपका है। 30 40 साल की रिटायरमेंट लाइफ हो गई है लोगों की, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं करना था सेविंग, कंपलसरी सेविंग, टैक्स सेविंग नहीं करना था, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसमें कोई मुश्किल नहीं रखी है, सिर्फ टैक्स रिबेट को चेंज किया है। ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी इनकम 3 लाख, ना कोई कैलकुलेशन आपके पास रेडी है क्या? मैं जानती हूं अभी आपको बिल पढ़ना है, इत्मीनान से आप पढ़ेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे। रफ कैलकुलेशन मुझे बताइए ना, कितना मेरे हाथ में बचेगा, कितना मेरे हाथ में आएगा? एक अजम्पशन लेके बताइए ना। जैसे 25 लाख के लिए अभी मैं कहूं तो 1,99,450 रुपए बचता है, 1 लाख से थोड़ा सा कम। तो एक कम अमाउंट नहीं है, इसको हम देखें तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं फिर भी इसको कंपेयर करूंगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि कुछ भी बदला नहीं है, तो 25 लाख तक अगर मैं सारे टैक्स बेनिफिट लेना चाहूं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ये टैक्स 0 भी हो सकता है, जो कि अभी न्यू टैक्स रिजीम में वो 2,86,000 बन रहा है। तो इसलिए गलती ये ना करें कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ बहुत ज्यादा लोग जंप कर रहे हैं। एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम में, कहते हैं ना, पुरानी परंपराओं को कई बार हमें दोबारा से आना पड़ता है। आज आप महाकुंभ में देख रहे हो ना कितनी भीड़ उमड़ रही है, वो आस्था की। तो इसी तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम गया नहीं है, इसलिए जो लोग सेविंग करना चाहते हैं, एज ए कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, आई वुड रिकमेंड। लेकिन एक बात बताइए ना सुधीर जी, हमें जो कंसेशंस चाहिए थे, जो हमें छूट चाहिए थी पुराने टैक्स रिजीम के तहत, जो हमें 80 से मिल रहा था, वो तो यहाँ पर अब नहीं मिल रहा है। फिर भी आप ये कह रहे हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो पुराने टैक्स रिजीम में आपको छूट मिल रही थी, जो एग्जेम्पशंस मिल रहे थे, वो भले ही नए टैक्स रिजीम में नहीं हो, लेकिन ये टैक्स स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, आपके हाथ में पैसा आएगा जरूर, निवेश करना है कि नहीं करना है, कंज्यूम करना है कि नहीं करना है, वो आपके हाथ में है। क्या ऐसा बोला जा सकता है? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में आज भी कम आएगा। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन और पूरे टैक्स बेनिफिट लूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट ज्यादा हैं, लेकिन लोग सेविंग नहीं करना चाहते। होम लोन लेने वाले 15 से 20% होते हैं, और जबकि वेल्थ क्रिएशन का एक, उसको हम टूल बोलते हैं कि आप
महीने के महीने EMI दे करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए घर बना सकते हो, उसको यूज कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए भी। लेकिन लोगों को हाथ में पैसा रखना और खर्च करना, कुछ लोगों की तो जरूरत होती है, घर में कोई बीमार है या कोई परेशानी है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्यूचर सोच रहे हैं कि वो अपने आप चलेगा। 30 साल की रिटायरमेंट का टाइम बम नहीं देख रहे हैं लोग, ये आएगा लोगों को मुश्किल 10 साल बाद, 20 साल बाद। सरकार की मजबूरी है, उसे कंजम्पशन चाहिए क्योंकि ग्रोथ चाहिए, विकसित भारत चाहिए। सरकार इसलिए दोनों स्कीम दे रही है, लेकिन किसी समझदार इंसान को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी चाहिए और किसी सलाहकार से बात करके रिज्यूम लेनी चाहिए। लोग ऐसे ही जंप कर रहे हैं, मेरे राय में कोई सलाह नहीं ले रहे। 80% से ज्यादा ऑनबोर्डिंग हो चुकी है नए टैक्स स्ट्रक्चर में, 50% ज्यादा ऑनबोर्डिंग हो चुकी है। तो दूसरा एक और चीज सुधीर कौशिक जी, क्योंकि हम अभी नए टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसके टैक्स स्लैब में बदलाव है, कंफ्यूजन कितना क्रिएट करेगा? अभी भी जो अनाउंस हुआ है, क्या इसको हम परमानेंट मारेंगे कि इसमें भी हमें लगेगा कि आगे चल के बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि लगातार इसको अट्रैक्टिव बनाने को लेकर जो मंशा है सरकार की वो बनी हुई है। तो क्या माना जाए कि ये अब जस का तस रहेगा कि बदलाव इसमें भी होंगे? बिकॉज अगर इतनी ऑनबोर्डिंग हो रही है, अगर हम 85% तक ऑनबोर्डिंग बोल रहे हैं, मान रहे हैं उसमें, तो क्या ये ऑनबोर्डिंग जारी रहेगी इतने कंफ्यूजन के बावजूद भी? देखिए, जब आपके पास 2 मिनट में मैगी तैयार होती है तो आप अपना पौष्टिक खाना भूल जाते हो और वो इंस्टेंट फूड की तरफ जाते हो। ये न्यू टैक्स रेजिम भी 2 मिनट का है कि ज्यादा कुछ करना नहीं है और मेरा टैक्स सेविंग हो गई। अब जब आपकी टैक्स सेविंग हो गई तो आपने बाकी चीजें, अपनी हेल्थ या वेल्थ नहीं सोची। तो इसमें खतरा वही है, कई लोग जंप कर रहे हैं 80%, जिसे भी आप परसेंटेज 85 कहो, पर उसमें से 20% 30% लोग ऐसे होंगे जो बाद में जाके फंसेंगे। वहां सरकार उनकी मदद कैसे करेगी? मुझे नहीं लगता सरकार ने ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी दी है कि जो लोगों ने सेविंग नहीं की उनका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सेफगार्ड होगा, या उनके बच्चों का। क्योंकि सेविंग की हैबिट जो है कई बार मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी नहीं है, यहाँ पर इतनी ज्यादा वो नहीं है, यहाँ लोग फटाफट से छोड़ देंगे। और खास तौर पे जो न्यू जनरेशन है उसको लग रहा है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज सारा पैसा, इतना महंगा महंगा मोबाइल फोन खरीदते हैं, 6-6 महीने की सैलरी चली जाती है। तो सेविंग हैबिट इनकलकेट कैसे होगी? आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को नहीं छेड़ा, आई एम वेरी थैंकफुल, ताकि जो लोग हमसे सलाह लेते हैं या जो हमारी सुनते हैं उनको तो हम बचा पाएंगे। पर जो लोग सिर्फ आसान चीजों को ढूंढते हैं, इंस्टेंट नूडल्स ढूंढते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा से हम कहते आए हैं कि नए टैक्स रेजिम में आपकी बचत को लेके जो है वो किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पैसे हाथ में चाहिए, वो जरूर आपको मिलेंगे। डिम्पी, आज तुमने ढोल नहीं बजाया यार, नहीं बजाया, आज सुबह से हम ढोल मिस कर रहे हैं। पीसीआर ढोल है क्या? बजाइए, अभी तो बजाना चाहिए, बिल्कुल बजाइए ढोल। टैक्स के मैटर पे बजाएगा, टैक्स के मैटर पे तो बिल्कुल। हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो ऐलान हो और कब हम तैयार। नहीं, टैक्स के मैटर पे बजाया था। बिल्कुल, बाजार अभी रेड में ही है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेशली हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर के बाद जो बाजार में हमें थोड़ी सी और गहराती हुई दिखाई दी है कमजोरी, लेकिन वो झूल ही रहा है। डिम्पी, नहीं, बिल्कुल झूल रहा है। और इसी बातचीत करने के लिए रोहित श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया सर। स्ट्रेंथ चेक करेंगे मार्केट की कितनी है सर? मार्केट वीक है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट इन रेंज है सर? तो सी मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं और जो इंडाइसेस हैं जिन पे कई सेक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। अभी बजट का जो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट है जो आप देख रहे हैं वो कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स और स्पेसिफिकली जो इमीडिएट कंजम्पशन वाले आइटम्स आते हैं, एफएमसीजी सेक्टर है, वो काफी तेज हो चुका है। बट दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपका जो निफ्टी है वो थोड़ा बहुत लुढ़क चुका है। तो ऐसा ही कुछ एंटिसिपेशन भी था, क्योंकि कंजम्पशन एक एरिया है जो कि टैक्सेस से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। बट ओवरऑल जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था हमें कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो अपना काफी टाइट रखेंगे और स्पेंडिंग जो है लिमिटेड इंक्रीज हो सकती है। तो जब लिमिटेड इंक्रीज हो सकती है, आप ये करते हो कि वो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा, आप या तो इस तरफ एलोकेट करोगे या उस तरफ एलोकेट करोगे, और जहां आप एलोकेट करोगे वहां पे बाजार तेज होगा, और वही चीज नजर में आ रही है। तो निफ्टी जो है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में स्पेंडिंग टाइटनेस से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, ब्रॉड ग्रोथ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा लोगों को, बट स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पे पॉजिटिविटी है वो आपको सामने नजर आ रही है और शायद कुछ दिनों तक शायद नजर भी आए। पॉइंट टेकन है सर आपसे। रोहित सर, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ आदित्य भी हैं स्टूडियो में, साथ ही रचित भी हैं। आदित्य, आपने क्या रीड किया है ये पोस्ट बजट, मार्केट में ताकत कितनी आई है? अगर हम ताकत की बात करें डिम्पी जी, तो मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड रहेगा मार्केट में। बजट के पहले ही एक अच्छा मूव हमने देखा था, आ गया है। तो अगर हम स्पेसिफिक इंडेक्स की बात कर ले, बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज़्यादा
मुझे नहीं लग रहा अपसाइड या करेक्शन भी हमें देखने मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लग रहा है, जैसे कि अभी रोहित जी भी बात कर रहे थे, कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स हो गए, ऑटोज़ हो गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जुबिलेंट फूड वर्क जैसे स्टॉक्स, मुझे लग रहा है ये सब स्टॉक्स में फोकस रखना चाहिए, यहाँ पे बाइंग आएगा। मुझे लग रहा है बिल्कुल, मुझे लग रहा है 2 व्हीलर स्पेस में एक बजाज ऑटो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे टारगेट्स 9600 के आएंगे और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 8800 का। ठीक है, डन। रचित जी, आपने मार्केट पे क्या रेट किया पोस्ट बजट? देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं एक फुलफिल होती हुई दिख रही है कि कंजम्पशन को बूस्ट देना था, तो उसके चलते जैसे कि अभी फेलो पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि कंजम्पशन में बूस्ट आएगा तो ये सारे सेक्टर्स चलेंगे। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट में इम्पैक्ट देखें तो मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन चेंज होता हुआ अभी नहीं देख रहा हूँ। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड जैसे कि आप देखें अभी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल्स पे, और 5800 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें 6500 के टारगेट्स लेके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। अब मैं जरा रोहित जी के पास वापस जाता हूँ। रोहित सर, जैसे अभी आप खुद भी बता रहे थे कि जो कंजम्पशन का प्ले है वो इस बार बजट के अंदर अच्छे से प्ले करवाया गया है क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया गया है। आप मेरे को FMCG, ऑटो, इन दोनों सेक्टर्स को चेक करके दे सकते हैं सर, कितनी पावर है इसमें? FMCG सेक्टर जो है वो सबसे पहले गिरा था, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब अक्टूबर से बाजार गिरना शुरू हुआ तो FMCG वाज द वीकेस्ट। तो जब वो वीकेस्ट था और सबसे ज्यादा गिरा है, उसमें अपवर्ड ट्रेंड भी आने का सबसे ज्यादा चांस बन गया। अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब जो बाजार दिसंबर 13 दिसंबर से गिरा था जनवरी तक, और वहां से अभी जो लास्ट 1 वीक में तेजी हुई है, इस पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर क्या था? एक्चुअली FMCG था, और फॉलोड बाय फार्मा एंड देन फॉलोड बाय ऑटो। तो ये 3 सेक्टर थे जो कि सबसे स्ट्रांग नजर आ रहे थे। ये इसलिए होता है कि जब बाजार गिर रहा है, कोई तो ऐसा सेक्टर है जो कि गिर नहीं रहा है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो जब बाजार रिबाउंड करता है तो वही सेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। और विद इन दैट आई थिंक FMCG एंड ऑटो आर नाउ प्लेइंग अ बिगर रोल, क्योंकि कंजम्पशन का थीम हमारे सामने आ रहा है। FMCG इमीडिएट इंपैक्ट आता है, तो आई थिंक देयर इज स्टिल अपसाइड, क्योंकि पूरे गिरावट की हम लोग अगर रिट्रेसमेंट निकालेंगे, करीब 50 to 60% रिट्रेसमेंट की जगह रहती है इतने बड़े गिरावट के बाद, उसका हम लोग शायद barely 38% अभी तक कर पाए। तो देयर इज स्टिल अ केस कि आगे भी जाके उसमें हम लोग फर्दर अपसाइड देखेंगे। अब ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, कल तक तो शायद फिर भी काफी वीक था, FMCG से थोड़ा ज्यादा वीक, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका अच्छा था। अब ऑटो सेक्टर है जो कि सेकेंडरी इफेक्ट में आता है, क्योंकि ऑटो रियल एस्टेट जो है ये डायरेक्टली आप कल के कल नहीं कंज्यूम करते हो, बट जो बजट में हमने जैसे फिस्कल डेफिसिट को फोकस किया, हमारी अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है, वो हमें जगह देती है कि आरबीआई कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट रेट के दर कम करे। एंड ये जो बड़े कंजम्पशन आइटम्स हैं, ये आप बोरो करके, बैंक से बोरो करके करते हैं, तो सेकेंडरी इफेक्ट इज देयर, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं लोगों की नजर, जब FMCG चल जाएगा तो आपकी नजर फिर ऑटो सेक्टर की तरफ भी जाएगी। एंड देन आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर सीइंग मोमेंटम इन सम स्टॉक्स, जैसे कि मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, वो ज्यादा बड़े हैं, और दूसरे जो आइटम्स हैं उनमें शायद इवेंचुअली आप बाइंग देख सकते हैं। सो आई थिंक ऑटो सेक्टर विल पिक अप ऑन द होप दैट लोअर इंटरेस्ट रेट्स विल लीड टू कंजम्पशन ऑफ बिगर टिकट आइटम्स। ठीक है रोहित जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर बिल्ड हुआ है और निफ्टी इस वक्त है 100 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक में देख रहे हैं कि 250 अंकों के आसपास की गिरावट है। एक सेक्टर जो बजट के ऐलानों से चलना था वो चला, कंजम्पशन वाला पूरा का पूरा खेमा, उसमें आप रिटेल देखेंगे, FMCG देखेंगे और ऑटो देखेंगे, ये सारे शेयर आपको ऊपर दिखेंगे। मारुति में 5% की तेजी है, ट्रेंट प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, ट्रेंट में 4% की तेजी है, ब्रिटानिया में 4% की तेजी, HUL, टाटा कंज्यूमर, ITC, ये सारे 2 से 3% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक खेमे में हम काफ़ी ज़्यादा निराशा देख रहे हैं और वो है कैपिटल गुड्स का, क्योंकि कैपेक्स के मसले पर मतलब कुछ ज़्यादा ऐलान हुए नहीं है सरकार की तरफ से। आप देखिए L&T 4% नीचे आ गया है, इसके अलावा पावर शेयर में आप पावर ग्रिड देखेंगे 3% नीचे, ABB, सीमेंस, कमिंस, ये तमाम शेयर 4 से 7% की भारी भरकम गिरावट के शिकार हो रहे हैं। और जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी उम्मीदें बिल्टअप थी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि निराशा का माहौल है। हडको जैसा शेयर करीब 5-6% नीचे आ गया, REC में कमजोरी है 4%, 5% के आसपास की। तो कंजम्पशन को अगर हम छोड़ दें तो बाजार में एज सच कोई फिलहाल एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। कंजम्पशन और थोड़ा रियल एस्टेट को भी उसमें आप
क्लब कर सकते हैं। ये कुछ चीजें और बाजार में देखने की गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, करीब 135 अंकों के आसपास की नरमी हो गई है। एक बड़े एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनकी नजर से भी बजट को जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ET Now स्वदेश का बजट के दिन बजट मास्टर कॉन्टेस्ट भी चल रहा है और इस घंटे के सवाल का वक्त हो गया है। आप एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए और स्मार्टफोन जीतने का आपके लिए मौका रहेगा। हर घंटे 30,000 तक के स्मार्टफोन का वाउचर ET Now स्वदेश आपको दे रहा है बजट के इस खास मौके पर। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बस आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8104112172, इस पर हाई लिखकर भेजना है। तो आइए लेते हैं इस घंटे का सवाल, और इस घंटे का सवाल है कि ET Now स्वदेश के थिंक टैंक का हिस्सा इनमें से कौन है? स्वामीनाथन अय्यर, बी दिनेश खारा, सी संजीवपुरी या फिर डी कुणाल बोथरा। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आपको भाग लेने के लिए सिर्फ अपने व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में जाकर हाई टाइप करना है और हमारे नंबर 8104112172 यानी कि 8104112172 इस पर आपको मैसेज ये भेज देना है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड के पूर्व दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं। सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा लग रहा है बजट के दिन आपसे बातचीत करके। सर जरा बताइए, बजट में आपने सबसे खास नोटिस क्या किया, क्या हिट है और क्या मिस है? देखिए, आपने अगर मेरी प्री बजट इंटरेक्शंस को देखा है तो सही जो मैंने कहा वही हो रहा है। मैंने कहा कि इस बार फोकस पॉपुलिज्म पे होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंजम्पशन से ही देश के आगे बढ़त, और उसी मुद्दे पर गया है। करीबन 1 लाख करोड़ का इनकम गिव अप किया है गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के हाथ में पैसा डालने के लिए, और 12 लाख जो कमाता है उसके लिए 80,000। अभी 80,000 में मानता हूं कि लीजिए कि करीबन 6,000 पर मंथ का EMI आपको कौन सी चीज खरीदने के लायक बना सकता है। यही है ट्रू पावर ऑफ दिस पैसा इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास, क्योंकि EMI के जरिए मेरी जो बड़ी घर खरीद सके, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो मैंने कहा था कि इसी से आपको मास मार्केट कंजम्पशन बढ़कर फिर प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी बढ़ने के बाद प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स बढ़ेगी। तो मेरा जो इच्छा थी कि गवर्नमेंट इस बार कैपेक्स से थोड़ा ध्यान अपना कंजम्पशन डाइवर्ट करे। सुनील सर, मुझे तो लगता है क्योंकि आप बजट से पहले हमारा जब इंटरव्यू भी हुआ था बजट एक्सपेक्टेशन को लेकर, तो शब्द वर्ड्स बाय वर्ड्स अगर मैं ये कह सकूं तो आपने जो चाहा था, जो कहा था, वो ही निकल कर आया है। ज्यादा पैसे चाहिए हमारे हाथ में, वो हमें मिला तो है। एक नया टैक्स स्ट्रक्चर नई व्यवस्था के तहत हमें मिला है। अब ये नए पैसे आपके हाथ में, एक टैक्स पेयर और एक इन्वेस्टर के नजरिए से पूछ रही हूं। बाकी मेरे दोनों सहयोगी आपको बाजार और बाकी कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक आम टैक्स पेयर के लिहाज से, एक निवेशक के लिहाज से, जो हमने नया टैक्स स्ट्रक्चर देखा है, जो अभी जिसका ऐलान हुआ है, हमारे हाथ में पैसे भले ही आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक डर था कि ओल्ड टैक्स रिजीम को फेड आउट कर दिया जाएगा, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? मैं इस सब्जेक्ट में देखिए, एक है सेविंग्स में देखिए, सीनियर सिटीजन्स को 50,000 to 1 लाख डबल कर दिया है सेविंग्स पे इंटरेस्ट पे, तो डेफिनेटली सेविंग्स का उनका अलोकेशन और भी बढ़ेगा। सेकंड, लोगों के हाथ में, जैसे मैंने कहा 12 लाख में 6,000 हाथ में है, तो थोड़ा कंजम्पशन की ओर जाएगा, थोड़ा सेविंग्स की ओर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से म्यूचुअल फंड की जो SIP की बुक है वो 26,000 के लेवल से 30-35,000 आसानी से इस साल के अंदर पहुंच सकती है। तो ये पॉजिटिव है इंडिविजुअल का सेविंग्स के लिए और इंडिविजुअल की कंजम्पशन के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव है। और खास करके सेंटिमेंट, क्योंकि हर साल लोग देखते हैं कि बजट से मैं क्या करूं अगले साल के लिए, और नाराज हो जाते हैं जब कोई टैक्स में रिलीफ नहीं आती है। इस बार जैसे आपने कहा पुरानी टैक्स रिजीम को भी कायम रखा है। और सेकंड चीज है कि घर के लिए 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस को वो टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं इंटरेस्ट डिडक्शन पे। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि बहुत से लोग आज शहर के बाहर सेकंड घर खरीद रहे हैं थोड़ी बड़ी, तो अब दोनों को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना दिया तो टैक्स की रिलीफ वहां पे भी ज्यादा होगी। तो ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट मिडिल क्लास की कंजम्पशन और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ बढ़ा सकती है। तो ये देश की आगे उन्नति के लिए बहुत बड़ी चीज है। खैर, मार्केट्स के अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। 12 लाख ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कैपेक्स और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं। ध्वनि पटेल भी हमारे साथ हैं। ध्वनि, आपने क्या किया मार्केट्स में रीड पोस्ट बजट?
जी बिल्कुल टिम्पी जी, डेफिनेटली बजट के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे कंजम्पशन के खेमे के अंदर हमें देखने को मिल रही है बाइंग, बट उस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट जो है यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमें बाइंग एक्शन जो भी अभी देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे डिक्लाइंस जो है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू एडवांसेस, और ओवरऑल रेंज निफ्टी के लिए अब जो ध्यान में रखना रहेगा ऊपर की तरफ में, तो 23,680 का लेवल है वो अब क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडेक्स के लिए, अब कोई भी एक फर्दर बाई साइड के ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस डे लो जो है वो यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 23,270 का लेवल है वो एक बहुत अहम स्तर रहेगा यहाँ पे इंडेक्स के लिए। कुछ दिनों तक यहाँ पे डेफिनेटली एक रेंज बार कारोबार देखने को मिल सकता है, और बाइंग एक्शन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सिलेक्टिव सेक्टर्स में दिख रहा है। मेरा काउंटर जो स्पेसिफिक अभी पसंद आ रहा है वो है जोमेटो का काउंटर। जोमेटो में अगर हम देख रहे हैं तो चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड 240 से लेके 248 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो 217 का लगा के रखना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं रचित से 2 सवाल ले लेता हूँ। रचित, जरा कैंपस चेक करना, आज लेदर को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कैंपस कितना बढ़िया चलेगा? आज अच्छा चला है, 7% ऊपर है। सर देखिए 7% ऊपर है, और अभी इसमें और स्टीम भी दिख रही है। अगर पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें, एंड अराउंड 324 का एक लेवल है जो ये बहुत जल्दी अचीव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 50 डेस्टिनेशन की भी खबर आई है, टूरिस्ट के बनाए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है। ईज माई ट्रिप करीब 6% ऊपर है। रचित जल्दी से देखो इसको भी आप। देखिए ईज माई ट्रिप न्यूज़ ड्रिवन भी बहुत ज़्यादा है, बट हाँ आज चला है, तो अराउंड आप इसमें देख सकते हैं 15 रुपये 60 पैसे का लेवल भी आपको ये एक बार दिखा सकता है। ठीक है, खैर इस बीच राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जरा बताइए सर, आपकी पोस्ट बजट क्या रीडिंग है? मार्केट सारे निशान में क्यों नहीं आ रहा, और क्या चाहिए था? केपेक्स का बूस्ट मार्केट को चाहिए था, वो नहीं मिला है। कंजम्पशन को डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और उसी हिसाब से हमने देखा कि ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस जो है काफी बेहतरीन कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट्स काफी लंबे रहेंगे। हालांकि आज निफ्टी डाउन है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा, और ओवरऑल हमारा बायस अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। और जहां तक आई थिंक ट्रेड्स के सवाल, आप यहाँ पर कंजम्पशन और जो एक तरह से ऑटो सेक्टर है, यहाँ पर आप ध्यान देके चल सकते हैं। हमारी टॉपिक इनफैक्ट रहेगी टाइटन का सेटअप काफी मजबूत है, लगातार स्टॉक हायर लोज बना रहा है। मेरे हिसाब से 3800 तक के लक्ष्य टाइटन के अंदर ओपन है, तो पोजिशनली टाइटन को बाय कीजिए। 3450 का स्टॉप लॉस रहेगा, और तकरीबन 300 पॉइंट की अपसाइड हमें लगता है कि आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये बाजार को लेकर व्यू। लेकिन हम देखें कि रियल एस्टेट के जो कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, रियल एस्टेट शेयरों में आज रौनक है। आप प्रेस्टीज में देखिए करीब 6% के आसपास की तेजी है, मैक्रोटेक में करीब 5% के आसपास की तेजी। आदित्य, कहीं आपकी नजर गई है रियल एस्टेट पैक पर? बिल्कुल अभिषेक जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स की हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट वही अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे उसको भी देख सकते हैं 1700 का टारगेट के लिए, और 1300 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक अगर मेरे रडार पे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मुझे लग रहा है इसमें भी एक तेज़ी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 2600 का टारगेट्स आ सकता है, और नीचे में 2200 का स्टॉप लॉस। एक सेगमेंट अभिषेक मुझे लग रहा है जिस पे फोकस करना चाहिए, अगर लोगों के पास हाथ में पैसा आता है तो शायद इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। बिकॉज अगर हम जेनजी की बात करते हैं और न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं, तो अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, और हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है न्यू जनरेशन का, तो उस स्पेस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा विकल्प होकर आ सकता है। और इसमें अगर हम देखिए CDSL में ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट आई है, रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर कर आ रहा है। 1100 का स्टॉप लॉस लगा है CDSL में, और ऊपर 1700 का टारगेट लगा है। मुझे लग रहा है CDSL में खरीदारी करनी चाहिए, लेवल्स पे अच्छा मौका है रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से। ठीक है, आदित्य ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रेज किया कि अगर पैसे अगर आते हैं लोगों के हाथ में और जेंजीज के पास आते हैं, जो नई जनरेशन है, जो अंडर 30 वाली भी जनरेशन है, तो मार्केट में थोड़ा सा पैसा आएगा, और उसके चलते आपको जो मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करके चलना चाहिए। एक दो चीज़ें और आई हैं बजट की, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। इंश्योरेंस वाला भी पॉइंट है कि FDI लिमिट को है 74% से बढ़ाकर कर दिया जाएगा 100%। हालांकि अगर मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, SBI लाइफ या फिर HDFC लाइफ, वहाँ पर कोई खास एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। इस पर जरा व्यू लेंगे आगे।
हमारे अच्छा रचित, आप ही जरा बताइए, स्टॉक्स आप ट्रैक कर रही हैं इंश्योरेंस वाले? बिल्कुल, इंश्योरेंस वाले हम ट्रैक कर रहे हैं और आप देखें कि ये अनाउंसमेंट ओवरऑल पूरे सेक्टर के लिए लॉन्ग अवेटेड था और कहीं ना कहीं एक आप देखें जो फॉरेन मार्केट का पार्टिसिपेशन है वो बहुत एग्रेसिवली होगा। मार्केट में अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है और इससे जो लोग हैं वो भी बेनिफिटेड होंगे। तो अभी क्योंकि गिर रहा है ये, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाए, बट आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को जैसे अभी हम ट्रैक कर रहे हैं तो अराउंड अगर आपको 1820 या 1800 के लेवल से मिलता है तो एक बार इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एसबीआई लाइफ को लेकर ये भी हमारे एक्सपर्ट पैनल में और ढेर सारे दिग्गज मेहमान जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में सैगल कैपिटल के अंशुल सहगल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिटेल रिसर्च सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। एक बार आपका फर्स्ट कमेंट बजट को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन को तो बूस्ट करने पर फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैपेक्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी निराशा का माहौल है। इस बीच एक बार एक्सचेंजेस का रिएक्शन इस पर क्या है? एनएससी के चेयरमैन आशीष चौहान अपना कुछ बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो ये एक तरह से फिस्कली रिस्पॉन्सिबल और टैक्स रिलीफ गिविंग बजट कहा जाना चाहिए। और गिवन जो विश्व में आज एक परिस्थिति उद्भव हुई है, कल भी अमेरिका में मेक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं। आज से शुरू हो जाएंगे। मेक्सिको और कनाडा पे करीब 25% टैक्स लगा है उनके इंपोर्ट्स पे, और चाइना के इंपोर्ट पे 10% अधिक लगा हुआ है। जो पहले भी लगा हुआ था उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा उनके प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कल ही घोषणा की है। तो ये भी एक फ्रेमवर्क है जहां पर जियोपॉलिटिकल चेंजेस काफी तेज गति से हो रहा है। उसमें भारत का जो ग्रोथ रेट है 6.4% का, वो अगले साल मेंटेन करने की उम्मीद है जिस तरह से बजट पेश किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये बजट एक तरह से काफी अच्छा, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल, कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ मोमेंटम टू कंटिन्यू कहा जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा? हाँ, ये बजट का दो पहलू है जो मुझे खास पसंद आया। एक तो ये कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दिया गया है जो पहले। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे मतलब बजट में ऐसी कोई निराश करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ठीक है ना कि एक सरकार कहीं कुछ दे रही है तो कहीं कुछ बैलेंस करने की स्थिति में भी होगी, और वही हम कैपेक्स के मोर्चे पर देख रहे हैं। दोनों तरफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैलेंसिंग एक्ट भी तो करना है बजट में, और वो चीज़ हमने होते हुए देखी है। लेकिन कंजम्पशन वाले शेयर आज दौड़ लगा रहे हैं और बढ़िया दौड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सहगल। अंशुल जी, थैंक यू सो मच। स्टूडियो में अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर आज। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर इन पर्सन। पहले तो ऐसे ही लगता था सब मिथ है, लेकिन आज रियलिटी लग रही है। हकीकत है ये सर, हकीकत है ये। सर बताइए कैसा लग रहा है बजट आपको, और सबसे अच्छा क्या लगा उससे शुरुआत करिए, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। देखिए, एक बहुत निराशा थी मिडिल क्लासेस में, लोअर मिडिल क्लासेस में, और वो इस वजह से भी थी कि कोविड के बाद से उन्होंने अपनी जितनी सेविंग्स थी उसमें डिप करके और अपना हाउस होल्ड चलाया। अब ये जो रिलीफ मिला है उनको, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि उस सेगमेंट को एक निराशा है, उन्होंने वो रिलीफ दिया है। और वैसे भी ये सेगमेंट थोड़ा सा रिवाइव हो रहा था, इस रिलीफ की वजह से रिवाइवल तेज़ होगा। वो स्टॉक्स में दिख ही रहा है आज की डेट में, और वो धीरे धीरे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वो और दिखेगा स्टॉक्स में। सो ये एक चीज़ जो कि बहुत पॉजिटिव है। थोड़ी सी निराशा ये है कि 11.2 लाख करोड़ का कैपेक्स जो बजट है, बजट में प्रपोजल है, उसमें थोड़ा सा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे है। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ये भी अंदेशा होगा कि हमने हैवी लिफ्टिंग कर ली है कैपेक्स की, अब प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन बेट ऑन कर देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को वो उठाना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज अच्छा बजट है। नहीं, वो अगर डेफिसिट वाला टारगेट देखें नेक्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4.4 का, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा जवाब और दे दीजिए आप, तभी तो एक छोटा जवाब लेता हूं मैं। FIs पसंद करेंगे इसको?
देखिए FIIs को एक इवेंट से उनको कुछ लेना देना जनरली होता नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ अगर दिखेगी और हमारा फिस्कल टारगेट ऐसा होगा कि हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी, अगर वो ये दो चीज़ें देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया पे इंटरेस्ट लेंगे। और मुझे ये लगता है कि FIIs ने सस्ते में बेचा है, महंगे में खरीदेंगे। चलिए सहगल साहब की बात को हम आगे ले जाते हैं और रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रोहित, इसी सवाल को मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ। हालांकि FIIs के पास वापस आने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको कंसिडर करने होंगे, और जैसे कि समझाया सहगल साहब ने कि कोई एक लौता फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो FIIs की वापसी को लेकर आपसे सवाल, और साथ ही बजट को लेकर 5 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे, क्योंकि विकसित भारत का बजट है देखिए, और मिडिल क्लास को, क्योंकि यहां पर हम कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टोरी को पूरी तरह से प्ले होता हुआ देख रहे हैं इस बजट में, कितना देना चाहेंगे 5 में से अगर मैं कोई नंबर मांगू तो? Probably 3. 3 नॉट बैड। तीन कहा ना आपने 5 में से, 10 में से नहीं, 5 में से, 5 में से नहीं हमारा मीटर जो है 10 का कहता है। अच्छा 10 का भी बोल दीजिए, तो मैं 8 समझ लूं 10 में से कि 9 कि 9.5? तो 7 out of 10 मैं बोलूंगा। चलिए फिर भी नॉट बैड। बताइए क्या क्या चीजें पसंद आई आपको, और अगर आपने सुना सहगल साहब को तो FIIs के सवाल पे भी जवाब दीजिएगा। तो FII का तो मामला बहुत पुराना है, एंड शायद एक ही तरीका उनको स्टिमुलेट करने का है कि आप उनके जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनको गायब कर दें, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड बेस्ड आइडिया है। बट अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उनके कई इन्वेस्टर्स का एक मेन पॉइंट क्या होता है कि वो उन देशों में पैसा लगाना चाहते हैं जहां पे उनको टैक्स फ्री हो जाए, और वो फ्रीडम जब हटा दी जाती है तो वो फ्लोज कहीं ना कहीं काफी कम हो जाते हैं। आप नोट करेंगे कि कई सालों तक FII के फ्लोज जो हैं भारत की तरफ काफी फ्लैट हो गए। तो उसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप FDI को एनहेंस करें, जो कि इस साल काफी कम हो चुका है, और उस डायरेक्शन में मेजर्स शायद बहुत ज्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत मिसिंग है, तो उसी के लिए मैंने कुछ अंक शायद कम किए हैं। फोकस पूरा एक तरफ रहा है कंजम्पशन पे, उसका कहीं ना कहीं, और फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने का। उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स हम लोग आगे देखेंगे, अगर RBI इस चीज को देख के इंटरेस्ट रेट्स काटती है और उस इंटरेस्ट रेट कट्स के बाद कुछ बूस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट साइकिल को, तो शायद उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स आगे जाके दिखें। बट इट्स अ लिटिल अर्ली, थोड़ा जल्द है ये चीज बोलने के लिए। RBI शायद कुछ करे भी या नहीं करे, उसका इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पे भी आता है, और वो चीज भी FIIs को इम्पैक्ट करती है। तो कई जो इश्यूज हैं सब के सब रिजॉल्व नहीं है, और इसलिए वो अंक कम हो जाते हैं। बट एक जगह पे फोकस रहा है, और वो चीज हमें सिर्फ सामने दिख रही है, और वो सिर्फ कंजम्पशन की एरिया पे है, क्योंकि वो इमीडिएट इम्पैक्ट है। लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है तो वो डायरेक्ट जो स्पेंडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स जो खरीद सकते हैं, वो हमें सामने दिख जाता है। ठीक है, चलिए हमने सिद्धार्थ खेमका सर को तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर से जोड़ लेते हैं उनको। हेड ऑफ रिटेल रिसर्च मोतीलाल ओसवाल में। सिद्धार्थ सर, बाजार को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब लेवल्स देख रहे हैं थोड़ी निराशा हो रही है। 100 अंक नीचे निफ्टी है। हालांकि हम दिल को तसल्ली इसलिए दे रहे हैं कि आज चलिए शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, FIIs दूर होंगे। आपकी रीडिंग क्या कहती है? मतलब बाजार का मूड अच्छा हो क्यों नहीं पा रहा है? कंजम्पशन बूस्ट मिल गया, अल्टीमेटली ये पैसे फिर इकोनॉमी में रूट होंगे। क्या चाहिए था बाजार को जो नहीं मिला? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। जो हम कहते हैं ना कि वी वांट एवरीथिंग, हमें केपेक्स स्पेंडिंग भी चाहिए था, हमें कंजम्पशन बूस्ट भी चाहिए था, और हमें फिस्कल डिसिप्लिन भी चाहिए था। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी मार्केट है ना, बहुत सारा ये जो पॉजिटिव्स है इसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा था। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आया है, बिकॉज स्पेशली ऑन द कैपेक्स फ्रंट, ऑन लॉट ऑफ दीज जो सेक्टर्स हैं, रेलवे, डिफेंस, जो स्पेंडिंग है वहां पर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। बहुत मतलब मैं अगर ओवरऑल बोलूंगा तो एक बहुत फाइन बैलेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया बिटवीन ग्रोथ एंड फिस्कल प्रूडेंस। हमारा अनुमान था कि 4.5-4.6% का फिस्कल डेफिसिट रहे, तो गवर्नमेंट ने उसे 4.4 का एक जो एस्टिमेट दिया है वो काफी सराहनीय है, गिवन दैट कि जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है यहाँ पर ये नंबर दिखाना
एक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत एफआईज को देता है। अगर आप देखें तो उन्हें ये नंबर बहुत काफी पसंद आएगा। मंडे जब ये आएंगे एफआईज तो इसको लेकर काफी पॉजिटिव लेकर चलेंगे। कंजम्पशन एक जो रोहित जी ने भी बताया कि एक नियर टर्म बूस्ट मिलता है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। और इनकम टैक्स स्लैब में बहुत टाइम से डिमांड था, जो मिडिल क्लास जो लो इनकम ग्रुप्स है वहां पर कंटिन्यूअसली प्रेशर बना हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप होगा। जो डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले हफ्ते वो डिटेल न्यू टैक्स बिल प्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है और डिटेल्स मिलेंगे और जिसको लेकर मार्केट पॉजिटिविटी लेकर चलेगा। इसमें एफडीआई बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है, 74% से बढ़ाकर 100% करने का फैसला किया है, लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स टूट गए आज। 6% एसबीआई लाइफ, 5% एचडीएफसी लाइफ, पीबी फिनटेक जैसा शेयर भी टूट रहा है, जिसके लिए शायद आगे मौके बढ़ने वाले हैं। क्या ये कंपटीशन थोड़ी सी और गहराने की आशंका से टूट रहे हैं या फिर कोई और वजह है? करवाया था एक बार संजीव बसिन जी को, मैंने बोला अपने टीचर आप है, आप इनसे विशेष ले लो आप। वो भी मैंने आपसे करवाया था। हाँ, तो वो भी हुआ है। अच्छा ठीक है, हम शायद अखाड़ा की देखिए तैयारी हो रही है कविता, अखाड़े की तैयारी हो रही है, वहां से शुरू होने वाला अखाड़े में। रेफरी साहब हमारे डिम्पी कालरा वहां मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम अखाड़े में जाएंगे, कुश्ती की शुरुआत करेंगे, ट्रेडिंग वाली कुश्ती की। लेकिन सिद्धार्थ जी जरा बताइए, इंश्योरेंस वाले शेयर क्यों टूट रहे हैं आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है कि ये जो एक स्टेप डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था इंश्योरेंस कंपनीज का कि एफडीआई बढ़ाया जाए, तो इससे बहुत आज मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आया है थोड़ा बहुत। अच्छा आपने बोला कि थोड़ा कंसर्न और कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन से मुझे लगता है कि कंपटीशन आए तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्लेयर्स प्रेजेंट है ये अच्छा वेल पेनिट्रेटेड है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, या तो थोड़ा फाइनल डिटेल्स, फाइनल प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, या फिर मुझे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में बात करने के लिए। एक एक राउंड के सवाल मेरे ख्याल से और बचे हैं जो आप सभी के साथ करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास वक्त है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें कुश्ती देखने जानी है। हम वक्त डिमांड करेंगे, हम भी डिमांड करेंगे ना, हक से डिमांड करेंगे। अब तो बनता ही है, बिकॉज बाजार खुश क्यों नहीं हो रहा है, इसका जब तक आप लोग हमें हल नहीं देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है आपको। लेकिन चलिए डिम्पी के पास हम चलते हैं। और डिम्पी, कुश्ती की क्या तैयारी है, बताइए। तैयारी जोरदार है जी, और यहाँ पे बुल्स और बियर की फाइट बड़ी जबरदस्त है। ऐसी फाइट है कि आप ये सोच रहे होगे कि भाई बुल्स जीतेंगे कि बियर। सुबह तो मैं तो ढोल का इंतजार कर रही थी यार। बजाओ जी, पहले ढोल बजाओ, पहले ढोल बजाओ, फिर लगाते हैं अखाड़े के अंदर दाव और करते हैं फिर इसकी शुरुआत। लगाइएगा ढोल नगाड़ों के साथ। हालांकि बाजार अगर हरे निशान में आ जाए तो फिर ये तो खैर चौका ही लग जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त वाला। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग अखाड़े के अंदर बहुत सारे पहलवान इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और आप देख रहे हो खचाखच हमारा अखाड़ा पहलवानों के साथ भरा हुआ है। सुबह से बाय सेल की कॉल्स लग रही हैं, और कईयों के तो दाव भी बड़े हिट हुए हैं और अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से करते हैं शुरुआत। और मेरे बिल्कुल साथ में खड़े हैं बिल्कुल शांत रहने वाले लेकिन बहुत ही कमाल के हमारे पहलवान हैं, और उनका देवांग भाई बताइए कौन सा ट्रेड आपने ढूंढा है? जैसे हमने देखा आज एफएमसीजी और कंजम्पशन ट्रैवलिंग सेक्टर्स पे काफ़ी फोकस था, तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा ट्रैवलिंग से इंडिगो का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ से बाय करने की सलाह है। 4245 का स्टॉप लॉस रखना है 4490 के टारगेट के साथ। ठीक है, तो इंडिगो एक उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है, और आप इस शेयर पे भी ध्यान रख सकते हैं। जबरदस्त चलने की हो रही है तैयारी। और न्यू करें हरियाणा में कि ये धुआं उड़ा देगा भाई, जब नहीं उड़ेगा ना ये धुआं उड़ा देगा सबका। तो इंडिगो पे रखना है ध्यान आपको। जबरदस्त एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिली है। कुणाल भाई बिल्कुल साथ में खड़े हैं। कुणाल जी, आई थिंक ओवरऑल हम कंजम्पशन पे यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव है। ऑलरेडी टेक्निकल स्ट्रक्चर बजट के पहले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था स्टॉक का, और स्टॉक का नाम है मारिको। हाई टॉप हाई बॉटम्स अभी भी इंटैक्ट है स्टॉक में, अपने 52 वीक हाई को भी सरपास कर रहा है। सो क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है जहाँ से मार्केट गिरा है। सो यहाँ से मुझे लगता है ये मूव और भी कंटिन्यू रहेगा। 650 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए, तो आप 650 का स्टॉप लॉस लगाया डाउन साइड पे। हायर एंड पे 740 और 760 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा छोरा खेल रहा है सेफ गेम, और देखो मैरी को बढ़िया हो गया और बढ़िया शेयर चल गया।